everybody is good at least one thing. ऊपर से शुरू करते हो तो नीचे की जर्नी is quite easy. When you want to escalate नीचे से ऊपर तक, then आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो मॉडलिंग को चकाचौंध से भरी दुनिया के तौर पर देखा जाता है. दूर से देखने में दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, नेम, फेम और ग्लैमर से भरी हुई. लेकिन इस फील्ड में सिर्फ नेम, फेम और ग्लैमर से ही काम नहीं चलता. इसके पीछे जरूरत होती है बहुत सारी मेहनत, लगन और जुनून की. और मॉडलिंग फील्ड के बारे में हमें वही लोग बता सकते हैं जो कि ऑलरेडी मॉडल रह चुके हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल. तो आइए हम बात करते हैं ब्यूटी क्वीन से लेकर क्वीन मेकर बनने तक का सफर तय करने वाली ग्वालियर शहर की मीनाक्षी माथुर से. तो मेरे साथ हैं आज मीनाक्षी माथुर, जो कि 2016 में मिसेस यूनिवर्स फेमस का खिताब जीत चुकी हैं. तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके इस पूरे सफर के बारे में अच्छे से जानते हैं. मैम, सबसे पहले ये बताइए आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच. मैम, एक ब्यूटी क्वीन से लेकर क्वीन मेकर तक का जो सफर रहा है आपका, इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को अच्छे से बताइए. Well, it all began when I was in my school, and just generally, like somebody suggested me that I was tall and I had good hair, very long hair. So somebody suggested me, why don't you participate in a local beauty contest like Miss Gwalior contest, and that was just a humble beginning. ऐसे ही बस just shock में I won that pageant, and then subsequently थोड़ा सा confidence बढ़ा and I participated in other 2 pageants. I won that also. Then in 1997 I was selected for Femina Miss India contest, which actually served as a very good platform, because back then बहुत सारे contest नहीं होते थे. There was only one major contest happening for Miss candidates, which was Femina Miss India. So my journey was very easy, I would say. There was no, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा. नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा. Nothing like that happened. It was easy for me because I think the launch pad itself was I think big. Femina is a very big launch pad. So जब आप ऊपर से शुरू करते हो तो नीचे की जर्नी इज़ क्वाइट ईजी. व्हेन यू वांट टू एस्केलेट नीचे से ऊपर तक, देन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो आई केम फ्रॉम देयर, सो दैट वाज लिटिल ईजियर फॉर मी. एंड देन आई डिड कपल ऑफ टीवी कमर्शियल्स एंड रैम्प शोज एंड प्रिंट एड्स, एंड कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगाया एंड आई बिकेम एस्टैब्लिश्ड मॉडल. एंड आई वाज स्टिल अ ग्रेजुएट जब मैं मिस इंडिया में गई थी, बट देन आई वांटेड टू डू माय पीजी, सो आई completed it in microbiology. Then I was doing PhD from JNU, Jawaharlal Nehru University, though I could not complete it because of my other modeling assignments and all. It was taking a lot of time, but that brought me back to Delhi. Then later in 2000 I was also one of the finalists for 4th Supermodel contest. It's an international contest for established models. But then, as you said, in 2016, after when I got married, I thought, okay, fine, Femina Miss India, I was in top 10, but I couldn't win it. So this time now I had so much of experience and everything, so I thought, okay, fine, now I can win. So I applied for this Mrs. India contest, knowing that I would win. And as expected, I won the contest, and as soon I was representing India at Mrs. Universe contest, and I won this Mrs. Universe famous title there. So that was about it. And then in the personal front, as you said, from being a beauty queen to a queen maker, on my personal front there were some things that brought me back to Gwalior. Like, actually my father passed away in 2015, so, and my brother also stays abroad. My husband's father also had passed away some time ago, so there were some family conditions that because of them, me and my husband, we both had to move to Gwalior. Gwalior में ऐसा क्यों है कि यहाँ से मेरे बाद में only Kajal Jain, there was one girl, she also came to me, and I had actually spotted her in one of the pageants where I was a judge. So I found something in her, some kind of a fire. So I went backstage and met her. She used to come to my home for training.
she got selected for Femina Miss India. There was another boy called Sharad Kelkar. He also approached me, and then we guided him, and then he got selected for Grassam Mr. India. And there are so many other candidates who were participating in other contests here and there, and they were always getting in touch with me. I thought I would be happy teaching others what I have learned. और आज जब मैं देखती हूँ स्टार स्टेप से इतने सारे बच्चे निकल के ग्वालियर से जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ग्वालियर आज अपनी एक पहचान बना रहा है पेजेंट्री वर्ल्ड में भी. सो एंड लोग कहते हैं कि स्टार स्टेप्स हैज अ स्मॉल रोल टू प्ले इन देयर डेस्टिनी. सो आई थिंक मे बी शायद you know, in 2005 में जब मैं यहाँ आई थी तो मे बी शायद God wanted me to be here because God wanted me to help out the people of Gwalior. You know, you have to give back also. You can't just take. So taking already happened. Like my mom told me, तुमने कर लिया अपने लाइफ में जो अपने लिए करना था. You have whatever I was doing, it was my personal achievement, my personal thing, but now you should do for others. So I thought, okay, fine, let me be the first person to give this place, give this city somewhere where you can learn authentic things and you can go ahead and explore the globe. So it took a while, and then we did no advertisement. आपने देखा होगा नीचे कोई बोर्ड भी नहीं लगा है. So I don't believe in advertisement at all. I believe that your work should speak for yourself. As for me also, when I was working as a model, or I have even been an anchor, actually I have been an All India Best Anchor. So I never actually marketed myself. You know, work came to me because I was good at my work. I only worked on myself, on improving myself, and the same thing we believe in our academy. Same thing I tell my students, that you just have to improve yourself. If you are the best, you know, it's something like if there is sun, it would shine. उसको वो अम्ब्रेला लाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. So that's about it. किसी भी फील्ड में जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है डिसिप्लिन की. तो जब मॉडलिंग की बात करते हैं तो मॉडलिंग में भी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं. तो आपके अंदर ये जो डिसिप्लिन था, ये कहाँ से आया और कैसे आपने अपने स्टूडेंट्स को ये डिसिप्लिन सिखाया? Yeah, it's actually primary to be self-motivated. It's very, very important. And to be self-motivated, it's important कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या नहीं लगे. Say for example, many of the students who come here, they don't like to read newspapers. Some people, they don't want to work out. They would rather prefer to go to a slimming center. So that's easy, you know. People are always looking for easy ways. So the idea is कि आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी you need to do it for at least 30 days, 1 month duration. You give 1 month duration to that particular thing to even understand कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. So it's not a choice कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. You have to do things because they have to be done in a certain manner. And as of me, my mom was in NCC. So, and my maternal family, a lot of people were into army and police services and all that. So at home, आपने पूछा कहाँ से आया, तो वहाँ से आया. So we had a very strict and a disciplined upbringing. Like, I was very scared of my mom, I must say. Very scared of my mom. I could never see her eye to eye, and it took me a while to even develop a habit of meeting people and seeing them eye to eye. I was always like this. So yeah, so it was because, you know, like we didn't really had an option कि ये करना है, ये नहीं करना है. It was everything was fixed. We didn't even had a cable connection. It was just Doordarshan which was coming at our home, and वो भी we were allowed to watch only Sunday movies. That's about it. No TV exposure, nothing.
So we were supposed to be doing even in summer vacations was to attend various hobby classes, just hopping from one class to another, sometimes sports, swimming, painting, dancing, something or the other, and no going to nani ji ke ghar, nana ji ke ghar, dada ji ke ghar, nothing like that used to happen. It was a very boring upbringing. Yeah. But then when I became little bigger, when I was in my 10th standard, then I realized, okay, these things are actually good for me, and I started becoming more serious about things that I was doing. Like became good in sports, I became good in NCC. I was already the senior. Senior is the commander in my school, and I think it really helped. जो बचपन में वो कहते हैं ना, मूर्ति को तराशने के लिए जो वो क्या हथौड़ी मारनी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा हथौड़ी पड़ी हम लोगों को. So, but it worked in our favor, and that we realized. I'm very grateful to my mother for that. She was very strict then, but I realized that I'm so thankful to her now. And the same things we teach to our children also, that you have to, there are no shortcuts to success. There's nothing like networking. आप लोगों से मिलो, उनसे पहचान बना लो और आपका काम हो जाए. Probably you will get 1 or 2 work, but that would never make you establish in any particular field. Not just about fashion or Bollywood, but any other field also. There is only one way, and that is to make yourself so good and world class that there shouldn't be any second person who should be near you in competence. So good. So if you will meet these winners who have just won a few days ago, 3 of our students have won this beauty contest, and they will be representing India in different international pageants. You wouldn't feel कि इनमें कहीं से भी कोई small town element है. They are all ready and totally global in their outlook and their communication skills and their way of thinking, way of dreaming, everything. You have to believe before others, believe in yourself before others believe in you, no? So I think that really is important. जैसे कि आपने बताया कि आप अपने मॉम से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो आपने जब उनसे इस बारे में डिस्कशन किया कि यू वांट टू बिकम अ मॉडल, आपको मॉडलिंग करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके रिएक्शन क्या थे, और सपोर्ट जो था फैमिली का, वो कितना सपोर्ट मिला आपको? No, my mom was very supportive, as in not making it a profession but keeping it a hobby. So as such, जहाँ भी मैं जाती थी, even for my fashion shows, in the beginning my mom used to travel with me along, and when I went for Femina Miss India contest, or even arranging dresses was a task. Being at Gwalior, my mom made sure all my dresses came from Switzerland, and they were really amazing. And since my parents were both into government job, still I don't know from where they managed to spend so much money on me, because I think it requires a lot of expenditure also. So we tell our students to start building up their wardrobe slowly, because all of a sudden if you have to buy things which are expensive, then it becomes a burden on parents. My mom was very supportive as such, but when it came to when I said I want to move to Mumbai, तब तक तो सब ठीक था, बिकॉज जब तक एज अ हॉबी था एंड आई वाज स्टिल स्टडिंग एंड आई वाज मॉडलिंग, तब तक सब ओके था. व्हेन आई सेड आई वांटेड टू मूव टू मुंबई देन इट वाज लाइक कि अरे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड माई पेरेंट्स वांटेड मी टू वर्क फॉर एनबैक्सी और DRDO और मे बी डू PhD. So they were very happy when I was selected for this scholarship program at JNU. So they were very happy about it. अच्छा, हमारी बेटी के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा. So that's exactly what she wanted. But like I got inclined towards this fashion more, and I said, okay, I'll take up a job, but give me 6 months. Only give me 6 months time. अगर 6 महीने में मैं एस्टैब्लिश हो गई, दैट वॉज आफ्टर आई हैड कम्प्लीटेड माई MSc, है ना. तो मैंने कहा 6 महीने बाद भी नौकरी मुझे मिल ही जाएगी, तो मैं 6 महीने में मुझे मौका दे दो बस. अगर मैं 6 महीने में एस्टैब्लिश हो गई तो आई विल कंटिन्यू विद दिस, और नहीं तो मैं कर लूँगी जॉब. बट thankfully it worked out, and 6 महीने में everything it shaped up and there was no looking back. आपने स्टडी
मैं भी इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और साथ ही साथ आप एक मॉडल भी रहे और अब एक तरीके से देखा जाए तो आप सिखाने का काम भी करते हैं। तो जो इतनी जो बड़ी जर्नी रही तब से लेकर आज तक, आपने इतने सारे रोल्स जो है आपने डिफरेंट प्ले किए, तो हर एक रोल जो है वो कितना चैलेंजिंग भरा रहा? I think it wasn't like a separate roles, but rather a one continuous journey. Because as in studies, जो बच्चे यहाँ पे अभी आ रहे हैं स्टार स्टेप्स एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए, they are all very well educated. Everybody, you know, if you look at these winners, they are all doctors, engineers, chartered accountants. You need to, it's not a beauty contest, it's a beauty with brains. So you need to be intelligent, you need to be very good with current affairs, you need to have your own brain, as in इस situation में मैं होंगी तो मैं क्या करूँगी. You need to have your own decision making ability. So it's not just about कि you know how to walk and you just know how to dress up nicely and poise. No, you will never win even a smallest contest that like that. So the entire mindset is important. Then what happens is, like, even if you go for a pageant and say for example you win a pageant, then you have to market yourself as a model. So that also requires certain marketing skills. So communication skills, networking skills, negotiation skills, ये सारी चीजें भी बच्चों को सिखानी पड़ती हैं. Otherwise they will get lost and people might just misguide them. जो ग्वालियर से जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मॉडलिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं डिफरेंट टाइटल्स के लिए, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? I think more than the technique, your mind plays a very big role. सो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मॉडल्स के लिए, बट मैं इन जनरल कहना चाहूँगी, लाइक इवन आवर अकेडमी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मॉडलिंग, इट्स अबाउट basic personality refinement, grooming school. It's a skill development school simply. It has nothing to do with modeling. But in general, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? For that, one should always practice these affirmation exercises, meditation, such things. Reinforce belief in your own abilities. Because कई बार क्या होता है, हमें अपने ऊपर ही शक होने लगता है कि शायद हम इस लायक नहीं है, शायद कोई और हमसे अच्छा है, शायद हमारी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, शायद हमारी फैमिली इतना कुछ नहीं कर पाएगी जितना किसी और की फैमिली कर पाएगी. सो और मे बी अ कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट वेरी गुड. लाइक इन दिस एरिया कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ अ प्रॉब्लम. देयर इज़ सम स्लैंग, देयर इज़ अ स्लैंग इन दिस एरिया, तो वो भी करेक्शन कराना बहुत ज़रूरी होता है. बट देन एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड. That's why we are here. That's why Star Steps is here. That's why you need a guide, but you have to walk. So everything जो चीज़ खराब हो सकती है, I want to say that वो अच्छी भी हो सकती है. You can always reverse it. You can always correct it. But what is important is that you must not quit. And you should dream big. You know, I feel really sad जब मैं students को देखती हूँ 9-10 standard के, और वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें 11th में क्या लेना है, या हमें नहीं पता कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है. और आई सी समबडी हु हैज़ नो ड्रीम बट दे से आई वांट टू बिकम अ SI. I say, if you want to get into police, then why are you not talking about at least becoming an IPS officer? एम ही SI का है. और somebody says कि मैं तो दुकान खोलूँगा, मैं टीचर बनूँगा. I mean, टीचर बनूँगी, दुकान खोलूँगी, these are no aspirations. ये तो बस ये बात हो गई कि I don't think I'm capable enough to do anything much. आप अपने आप को डाउनग्रेड करके मत चलो. अपने आप को ये मान के चलो कि you are good at least one thing. Everybody is good at least one thing. कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अच्छा है. God has made everyone differently, that's why. शायद मैं इस फील्ड के लिए बनी थी, आप जर्नलिज्म के लिए बने थे, कोई और डायरेक्टर बनने के लिए बना था, कोई और शायद टेक्नीशियन बनने के लिए बना था, कोई और प्लम्बर बनने के लिए बना था, कोई और कुछ बनने के लिए बना था. पर
जो भी बनने के लिए बने हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है. एंड फॉर दैट यू नीड टू राइट डाउन. Take it as a tip from me today. You need to write down, take a piece of paper, because at 8th 9th standard people are very confused कि मुझे आगे क्या करना है. So when you write down, it makes it black and white, it makes it clearer. Write down कि मुझे मेरे क्या 5 साल में एस्पिरेशंस हैं in terms of health, in terms of finances, in terms of my career, in terms of my family, divided into various segments. And उसमें लिखो मुझे क्या क्या करना है. करने के लिए मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए मुझे किन किन लोगों की मदद चाहिए पड़ेगी. क्या रिसोर्सेज मेरे पास हैं, क्या रिसोर्सेज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी. सो अ पिक्चर 5 years डाउन द लाइन शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड. और इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कम वॉट मे, फिर वॉल्केनो भी उसको हिला ना सके. सो दैट फर्म बिलीफ is important. और जो आपका नतीजा निकले, this process will take at least 1 week to do, because आपको उसमें बहुत सारी काटा पीटी करनी पड़ेगी. जब आप फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, अपने घर में जो ड्रेसिंग टेबल है या आपका दरवाजा है उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा उसको चिपका दो, और अपने फोन में या अपने लैपटॉप में उसका स्क्रीन पेज बना लो, home page, so that when you see it again and again, it will reinforce in your mind again and again that you can do it and this is your aim, ताकि आप उससे भटको नहीं. And I think it's not difficult, it's easy. तो मेरे साथ थी मीनाक्षी माथुर, जिन्होंने अपने मॉडलिंग करियर से जुड़े सभी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, और इसके साथ ही उन्होंने अपकमिंग मॉडल्स के लिए कई सारे टिप्स भी दिए. आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट. कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली. नमस्कार.